So in the last lecture, we have studied uh, what is object-oriented programming. Basically, the definition, how the need was developed for OOP, and what were the earlier approaches, like modular programming approaches were there, procedure-oriented programming approaches were there, and then after object-oriented programming approach was developed. And we also studied the differences between POP and OOP and how the drawbacks of POP was converted to advantages in OOP. So just if we want to define OOP, so it is an approach to problem solving where all the computations are carried out using objects or the coding is built around the objects. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक गाइडलाइन है प्रोग्राम लिखने के लिए जिसको फॉलो करके आप कर सकते हैं ऐसी कोडिंग तैयार करते हैं जो ऑब्जेक्ट के अराउंड बिल्ड होती है एंड ऑब्जेक्ट they will be having their specific data, they will be having their functions, and then the program, and so that they will be related to the real world, and real world programming is much easier. Okay, than everything being logical. So let's now move on with the second lecture, that is object-oriented programming paradigm. You can also call them basic concepts. Okay, so students, these are the 8 building blocks of the object-oriented programming language. If you study these 8 concepts, then it will be easier for you to write programs in languages like C++ and Java, which uses this approach. Once you understand the concept, this is just like understanding the theorem for geometry. Once you understand the theorem, you can solve any problem based on that theorem, right? Once you understand the formula, you can solve any mathematical solution with that formula. Similarly, these are the concepts or the OOP paradigms. Based on this, the language is created. And we will take or discuss all of these 8 concepts one by one in detail with examples. But first of all, mute your mic. But first of all, I will just introduce you with the terms, the basic terms in just one line. Okay, just a basic introduction to every term among this. First one, object. Second, class. Let me read all of them once for you. Object, class, data abstraction, data encapsulation, inheritance, polymorphism, message passing, dynamic binding. Okay, let's start with the object. The object is any real world entity which is physical as well as logical and specified by its attributes and functions. Okay, so basically ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होता है जिसकी कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, एट्रीब्यूट्स होंगे एंड इट विल बी हैविंग सर्टेन बिहेवियर because every object will have certain behavior in that real world and that will define that object. And these objects are the key components of object-oriented programming. Okay, just like for example student. Okay, for student management system, student can act as an object which will be having its attributes like name, age, which will be having its functions like exam score, sports score, and extracurricular, right? So this is the function or this is how the student behaves. Second, class. Class is the specification of an object. Class gives a definition to an object. So binding the data and functions of an object, this job is done by a class together. Binding the data of an object and functions of object together is known as class. So in program, we write class to give definition to an object. Third, data abstraction. Abstraction means showing the most essential features only of the object
to the end user or to the customer. So in object-oriented programming, data abstraction plays an important role by hiding the unnecessary essentials and showing only the most relevant features to the end user. Okay, so you will understand these things when I will give you example, but for now you just try to understand the meaning of those terms. Fourth, data encapsulation. Data encapsulating means wrapping up the data and functions associated with the object together inside class, and in this way achieving data hiding is known as data encapsulation. This is the most important feature of object-oriented programming because with this data security is achieved. What thing is achieved? Data security. और जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था कि पीओपी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या फ्लॉज थे, तो देयर वाज डेटा सिक्योरिटी मिसिंग. Data was not secure and it was flowing freely from function to function, maybe in the form of global data, right? And it was changed by every function that is having access to it. And so data was not secure at all in the C languages, procedure-oriented programming languages. But in object-oriented programming, we achieve data security by encapsulating them inside the class and deciding whom to give access and whom not to. Okay, so that we will see how those access specifiers are devised and how they work, but encapsulation provides you data hiding. This is the important thing that you must remember. Fifth, inheritance. Inheritance means it is the process by which one class can be inherited from the other class, and when one object wants to acquire the properties from the object of another class. In that case, we inherit a class from the existing one. So inheritance is the fundamental concept, one of the fundamental concepts of OP, and again it is one of the most what we can say key component among this, because it has achieved the code reusability and it saves a lot of time. Because of inheritance, the programmers development time, means whatever the time they take to write a program, it was saved in much amount. Okay, so inheritance is something that enable us with the code reusability. Sixth, polymorphism. Poly means many, morph means forms. So it is the ability to take more than one form by a single function name. So when you use the same symbol or same function name for the multiple actions execution or for the multiple purposes in the same program, then it is polymorphism. This was not there in procedure-oriented languages. This is now in object-oriented programming. So polymorphism is not possible with C. Polymorphism is possible with C++ and Java-like languages. Seventh, message passing. In object-oriented programming, the objects do communicate in the program. And how do they do this? They pass the function call message. And depending on that, the function will be executed. So whatever that message is, that object name and dot the function name, that message is known as a message passing. So how the objects communicate? They pass the messages inside the program and then they execute the program, and the program gives you the output. Then 8, dynamic binding. Dynamic binding is achieved how? So object, when it calls to the function, depending on the type of function, depending on the types of arguments passed to the function, the exact function is being called, and that is known as dynamic binding, because that call is exactly bounded with that function which needs to be executed at that time. So dynamic means the runtime. Static and dynamic, there are two timings. No? In the program, static means what we write inside the program while we save it or before we save it. But runtime or dynamic time means while the program is in execution,
That time is known as dynamic time or the run time. So at that time, these things happen. Exact function is getting called by that object depending on the types of arguments passed, depending on the number of arguments passed. And this is known as dynamic time. Okay. So students, this was just a brief introduction of every term. I think so that you will find it difficult for now क्योंकि आपको इस बारे में ज्यादा डिटेल में पता नहीं है, but you will find it more helpful when you will revise and understand all of these concepts. जब आपको ये सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे और उसके बाद जब आप रिवीजन करने जाओगे तो अभी जो मैंने बोला है वो आपको हेल्पफुल रहेगा रिवीजन के लिए. ओके, लेट्स मूव ऑन with the first concept. Now we will discuss every concept with example, how it is written and what is the use and everything. First, object. Okay. Okay. So, objects are basic runtime entity, which is physical as well as logical and which has specific characteristics and behavior. What is the meaning of this thing? See, it may represent a person, a place, a bank account, a table of data, or any item that the program must handle. अब हम आपके एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, आप लोगों के एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. हम ऑब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, राइट? जैसे हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट डील्स विद first creating the objects and then build code around those objects. But the main thing is how to select the objects then from the real world. So, आप इस वर्ल्ड में आपको जिस रिलेवेंट जिस चीज का सॉफ्टवेयर बनाना है उस चीज से रिलेवेंट आप ऑब्जेक्ट्स पहले फाइंड आउट करें. और आप ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे? जिसके स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स है और जिसके स्पेसिफिक फंक्शंस है या बिहेवियर है. ओके, नाउ सी, जैसे स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है तो मुझे उसमें स्टूडेंट या ऑब्जेक्ट लगता है. ये ऑब्जेक्ट मैंने क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि मुझे लगता है स्टूडेंट की स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स है जिससे वो आइडेंटिफाई होता है पूरे कॉलेज में. और मुझे लगता है कि स्टूडेंट का एक बिहेवियर भी है, लाइक स्टूडेंट गिव्स एग्जाम, स्टूडेंट स्कोर, स्टूडेंट पार्टिसिपेट्स इन द स्पोर्ट्स, स्टूडेंट पार्टिसिपेट्स इन द curricular activities, cultural activities. So there is some function performed by the student. That is his behavior, his or her behavior. And attributes यानी कि जिससे आप कॉलेज में जाने जाते हो, your name, your address, your branch, your section, your age, right? So these are the attributes or the data related to the student object. And what are the functions performed by that object? मतलब स्टूडेंट क्या क्या करता है कॉलेज में, तो वो हुए उसके फंक्शन. तो स्टूडेंट कॉलेज में क्या करता है? He scores, right? He gives exam, so score can be one of the functions. He plays sports, so sports score can be another function. And curricular activities, that can be the third function, right? Let's take another example. If there is a library management system, okay, in that system I find book can be one of the objects. See, there will be many more objects like user, then student will be the object of the part library management system. But I'm discussing about the how to select those objects, right? The specific objects. So for library management system, the first object that came to my mind is book. Why book? क्योंकि बुक के लिए स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स है. क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं बुक के? बुक ऑथर्स नेम, बुक में भी मैन्युफैक्चर में भी पब्लिशर्स नेम, देन उसमें भी नंबर होता है, बुक का नंबर होता है, राइट? सो बुक नंबर एंड दिस नंबर ऑफ पेजेस, दिस कैन बी द एट्रीब्यूट दैट आइडेंटिफाइज द बुक uniquely among all the books in the library, right? Which helps you to find out the book. तो ये हो गया डेटा. और इस डेटा पे ऑपरेट करने वाले फंक्शन क्या हो सकते हैं? बुक का फंक्शन क्या है? या तो बुक को कोई इश्यू करता है, राइट? या तो बुक को कोई रिटर्न करता है, या तो हम बुक का डेटा डिस्प्ले कर सकते हैं किसी के भी लिए कि ये बुक अवेलेबल है क्या लाइब्रेरी में, सो सर्च दैट बुक एंड फाइंड आउट द डेटा. सो व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ अ बुक? इश्यू. Okay, what is the second function?
could be their display data, right? Display data. So there is attributes and functions related to the book. So book can be an object. और क्या ऑब्जेक्ट हो सकता है? जैसे आप टीवी ले लीजिए, राइट? टीवी टीवी is having the attributes like height, width, and what are the functions associated with the TV? You can switch on the TV, you can switch off the TV, you can turn volume control and tuner. Okay, these are the basic functions of a TV. So TV is an object. It is physical as well as logical entity, and it can be identified or specified by its attributes and is having a particular function. Okay, so an object could be any real world entity which will be having its specific attributes and will be having its specific functions which will operate on those attributes. समझ में आ रहा है? So here I have drawn some of the objects which are like book, car, person. Car is also an object. Car के attributes क्या हो सकते हैं? There could be manufacturer's company name, right? Then engine number, then there could be car number, right? Every car is having certain ID. And what are the functions of a car? You can switch on the car, then start the car, stop the car, and there could be speed, right? So these are the functions performed by the car. So car is an object. Okay. The term object means a combination of data and program that represents some real world entity. See, there are many ways to represent object, but these are the standard ways that I have drawn here. See this figure. These are the standard ways which are given in the book of object-oriented analysis and design. This is how the object has to be represented in text references. So see, if I am writing object student, so how it can be represented? Object student will be having its data and function. See, object doesn't come alone. It will always come along with its data and functions. आप बोलेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका सिर्फ डेटा ही है, तो वो ऑब्जेक्ट नहीं है. ऑब्जेक्ट का डेटा होना चाहिए और ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ बिहेवियर होना ही चाहिए. हाउ इट रिएक्ट इन द रियल वर्ल्ड, हाउ इट बिहेव्स इन द वर्ल्ड. So every object will come along with its data and the functions which will operate on that data. So अगर हम student object लेते हैं तो इसका regarding data क्या हो सकता है? Name, date of birth and marks. See, there could be many more attributes related to the student. I have taken only 3. और भी यहाँ पे attributes आप लोग add कर सकते हैं. Address, branch, section and all. But we have taken only 3 attributes for an example. What could be the functions of student? Total, average, and display. Total will calculate the marks total, average will calculate the best among those 2 terms, and display will display those results, final results, right? So student is an object with the data, 3 attributes, and functions. How many functions? 3 functions, right? See, we can take one more example. Here I have shown object with attributes and functions. So suppose there is a person. Okay, obviously if it is showing salary, we can consider it as an employee. Okay, so what could be the attributes? Name and salary. Now see here, name is an attribute and Amit is the value of that attribute. Okay, name is an attribute, Amit is value given to that attribute. So name Amit. Salary 25,000. This is another attribute. So salary is the attribute and 25,000 is the value of that salary attribute for this person. Now this part considered as a data. तो ये जो attribute portion होता है ना, इसको क्या बोलते हैं हम? ऑब्जेक्ट का डेटा बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं. ठीक है. तो कैरेक्टरिस्टिक्स, डेटा, एट्रीब्यूट्स, ये सब एक ही चीजें हैं.
Now data is operated by who? Functions. क्योंकि सिर्फ डेटा होने से कोई मतलब है नहीं, जब तक आप उस डेटा पे ऑपरेट नहीं करेंगे उसका क्या ये होगा एंड रिजल्ट। जैसे स्टूडेंट्स के मार्क्स आ गए, हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स है पता चल गया, लेकिन जब तक आपको आपका फाइनल ग्रेड पता नहीं चलता कि आपने फर्स्ट सेम में सेकंड सेम में कितना स्कोर किया, इज देयर एनी मीनिंग? नो, वी नीड टू कैलकुलेट द एंड रिजल्ट्स, एंड एंड रिजल्ट्स मीन्स द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। The output of the program can be given only by the functions, क्योंकि functions वो होते हैं जो आपको एक sequence of instructions execute करके output देते हैं. So function is that coding which operates on that data and gives you the output. So there has to be functions which will operate on that data. तो अगर ये डेटा है तो डेटा पर ऑपरेट होने वाले ये आपके फंक्शंस भी प्रोग्राम में होने ही चाहिए. सो एवरी ऑब्जेक्ट विल कम अलोंग विद डेटा एंड फंक्शन. फंक्शन कोड बोलो, फंक्शन को मेथड भी बोलते हैं, फंक्शन को प्रोसीजर्स भी बोलते हैं, और उसको ऑब्जेक्ट का बिहेवियर भी बोलते हैं. सी गाइस, देयर आर मल्टीपल टर्म्स फॉर द सेम वर्ड, यू मस्ट लर्न ऑल दिस टर्म्स. जैसे मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट के डेटा को ही उसके एट्रीब्यूट्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बोला जाता है, वैसे ही ऑब्जेक्ट के फंक्शन को प्रोसीजर्स भी कहते हैं, मेथड्स भी बोलते हैं, बिहेवियर भी बोलते हैं. ठीक है. सो I have written here display and get data, two functions associated with these two objects data. So display function, obviously it is going to display this info, okay, display these two attributes, and get data will help you to get the data or save the data, or when you enter this attributes into the database, it will receive it from the user and save it. Okay, so two functions can be there, and whatever the saved data is, that will be displayed with the help of display function. So this was what regarding the object. And one more thing I want to tell you, though you have to refer your textbook only while writing the exams, you are going to refer the content from your textbook, the examples from your textbook, and these are the things that I have created for your simplicity of understanding. Okay, so there are some diagrams I have taken from your textbook, but some diagrams are not there. So it's not that you are going to study only this PPT. Students, you have to go through the textbook to exactly understand the technical terms. Okay, so follow those textbooks while studying for the exam. This is something that I have designed for you to make it simpler. Okay. Anyone who is having doubt regarding objects, just drop your message in chat box. Have you understood the concept of objects? Yes, ma'am. Drop your messages. सो गए क्या बाकी के लोग? It's 12:30. I can understand, but you are not going to sleep. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. For what? Understood the concept, or are you sleeping के लिए? सो रहा नहीं मैम, कैसे नो? ठीक है. माइक म्यूट ही रखो तुम लोग. ये चैट बॉक्स यूज करो ना, मोबाइल में होता नहीं है वो. ठीक है. Let's move on to the next concept, that is class. So class, it is a specification of the object. मतलब अगर आपको, देखिए इसको मैं आपको ऐसे बताती हूँ. आप कॉलेज में आते हो, एडमिशन फॉर्म भरते हो. एडमिशन फॉर्म का फॉर्मेट सबके लिए एक जैसा है, राइट? Everyone receives the same copy of the admission form. Like attach the photo on the right side, तो वहां पे एक स्क्वायर बॉक्स दिया होता है. इधर आपकी परिचय की नेम, ईमेल एड्रेस, your email ID, your contact number, then maybe some other details regarding with the demand draft and all, right? And everything. So every student receives the same format. So that same Xerox or the blueprint, that can be called as a class. Class is blueprint for an object, but every object will have its own different data. मतलब हर कोई
स्टूडेंट अपनी अपनी इंफॉर्मेशन अपने फॉर्म में भरेगा, सब सेम नाम तो नहीं लिखेंगे, हर कोई अपना नाम लिखेगा, अपनी फोटो अटैच करेगा, लेकिन उसी फॉर्मेट में करेगा जिस फॉर्मेट में कॉलेज का फॉर्म है. Every student will attach the photo where it is given. Okay, the square box. Every student will write the name where it is given. So everyone is provided with the blueprint with the xeroxes, multiple xeroxes, but of the same type. But every object's data will be different. Now this is what you can relate with the class and object. क्लास एक ब्लूप्रिंट मतलब एक ढांचा, एक फॉर्मेट तैयार करता है कि ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, और अगर उस क्लास से कोई भी ऑब्जेक्ट बनता है तो उस ऑब्जेक्ट की वही प्रॉपर्टीज होती है और वही फॉर्मेट होता है. हालांकि वो अपना डेटा उसमें डिफरेंट डिफरेंट फीड कर सकता है, लेकिन उसका फॉर्मेट वही रहेगा, उसके फंक्शंस वही रहेंगे. Entire set of data and code of an object can be made user defined data type with the help of class. Objects are variables of type class. It gives prototype to the class. Set of attributes means which are represented by variables and properties for that object, and behaviors means which is represented by the function. Now see, if I write one statement, what is this for you? What is the meaning of this? इंटीजर है. Variable declaration. Variable declaration. Yes. Now I will tell you what it signifies. This single statement tells me three things. First thing, A is a variable of type integer. Second thing, A will take up 2 bytes for storage in memory area. Third thing, A will be assigned, whenever it will be assigned with the value of type integer only. ओके, अब ये सब चीजें हमने कैसे बताई? क्योंकि ए के सामने इंट लिखा है, और जब भी किसी वेरिएबल के सामने उसका डेटा टाइप लिखा जाता है तो वो वेरिएबल उस टाइप का हो जाता है, मतलब उसको वो सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करनी पड़ती है जो उस डेटा टाइप की है. तो अगर इंटीजर, हमें पता है कि इंटीजर टाइप के नंबर 2 बाइट्स ही लेते हैं मेमोरी में, तो अगर आप किसी वेरिएबल को एज एन इंटीजर डिक्लेयर करते हैं तो वो उसी की तरह बिहेव करेगा. तो अगर आप उसके सामने ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, so all of those variables will behave like an integer. Similarly, class gives a data type to object. Once you write a class and declare object of that class, now that object will behave just like the class. Means उस क्लास में जो भी कोड लिखे हैं, जो एट्रीब्यूट लिखे हैं, वो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट को अप्लाई हो जाएंगे और ऑब्जेक्ट उसी वे में बिहेव करेगा. ओके, दिस इज द मीनिंग. अब इसे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्यों बोला गया है? मैं पहले आपको डिफरेंस बता दूं कि व्हाट इज बिल्ट इन डेटा टाइप एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए उसके लिए. बिल्ट इन डेटा टाइप मतलब वो डेटा टाइप जो लाइब्रेरी में इंक्लूड किए जाते हैं जब वो लैंग्वेज डेवलप होती है. ओके, सो देयर आर सर्टेन लाइब्रेरी फाइल्स, राइट, already predefined when the class or when that language was designed, developed, or written. And those built-in data types can be used directly in the program by the programmer or developer. Okay, now what is user-defined data type? User-defined data type means something that is constructed by the user as per his requirements. जस्ट लाइक अगर आप लोगों ने सी अच्छे से पढ़ा होगा और आपको स्ट्रक्चर का कंसेप्ट याद होगा, तो क्लास इज मोर लाइक अ स्ट्रक्चर. डू यू रिमेम्बर द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर? सी, अरे क्या है? अरे इज सिंगल डेटा टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन, राइट? कलेक्शन ऑफ सिमिलर data type elements, that is array. But what is structure? Structure is collection of different data type elements. तो यही चीज होती है क्लास में. तो क्लास का जो बेसिकली कंसेप्ट डिवाइस हुआ है ना, वो स्ट्रक्चर से हुआ है, लेकिन उसको थोड़ा और मॉडिफाई किया गया.
सो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप यानी कि जो यूजर खुद लिखता है प्रोग्राम में, ऐसा नहीं कि ये कोई बिल्ट इन चीज है। तो मैं अगर स्टूडेंट नाम की क्लास बनाना चाहती हूँ तो मैं उसमें जितने चाहे उतने एट्रीब्यूट्स ऐड करूँ या जितने चाहे उतने फंक्शंस ऐड कर सकती हूँ, और वो मेरा टाइप हो गया यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। मुझे किसी ने लिख के नहीं दिया या फिर कोई लाइब्रेरी का फॉर्मेट नहीं है कि इसमें 2 ही एट्रीब्यूट आएंगे 2 ही फंक्शन आएंगे। मैं आप लोग अपना खुद का कोई भी डेटा टाइप बना सकते हैं, राइट? आप लोग खुद का जैसे स्ट्रक्चर बना सकते हो वैसे आप कोई भी डेटा टाइप डिजाइन कोई भी क्लास बना सकता है यूजर, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। अगर स्टूडेंट के लिए मुझे क्लब पार्टिसिपेशन सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसमें क्लब एक्टिविटीज, नेम ऑफ द क्लब, ये सब चीजें आएंगी। अगर स्टूडेंट के लिए मॉडलिंग का कोई ये बनाना है सॉफ्टवेयर तो उसमें उनके हेयर कलर, द whatever the eye color, and this could be the attributes, relevant attributes. तो अलग अलग क्लासेस बनेंगी ना डिपेंडिंग ऑन द रिलेवेंट डेटा, राइट? स्टूडेंट सेम है लेकिन वो किस चीज में इन्वॉल्व है उस पर डिपेंड रह के उसके डिफरेंट डेटा टाइप या डिफरेंट क्लासेस बन सकती है। तो इसी को हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, ठीक है? क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है फॉर एन ऑब्जेक्ट वेयर objects are created from that class and they will have the same attributes and they can use those functions or access those functions which are defined inside that class. Okay, see here I have taken an example person. अगर हम class person consider करते हैं तो इस person class में देखिए ये जो दिख रहा है first portion, these are the attributes of that class. Okay, तो ये एट्रीब्यूट्स और डेटा जो हुआ नेम, सैलरी, एज, ठीक है उस पर्सन के लिए। और इस पर क्या क्या प्रोसीजर्स हम अप्लाई कर सकते हैं? गेट डेटा, मतलब जिससे हम ये सारा डेटा सेव करेंगे या तो प्रोग्राम में फीड करेंगे, इनपुट करेंगे। और सेकंड हो सकता है डिस्प्ले मेथड, डिस्प्ले से क्या करेंगे जो डेटा आपने सेव किया उसको शो करो, राइट? सो 2 methods for the class person and 3 attributes for the class person in this example you may see. Now from this class person, if I try to create object, automatically that object will be having those attributes by default. So it is like xeroxing. आप उस ब्लूप्रिंट की क्या कर रहे हो? जेरोक्स निकाल रहे हो, बस उसमें अपना डेटा भरना है। अब जैसे पहली जेरोक्स मतलब पहला ऑब्जेक्ट क्या कह रहा है? ऑटोमेटिकली इट गॉट द 3 एट्रीब्यूट्स, राइट? ऐसा है क्या कि 2 ही एट्रीब्यूट्स है? नहीं, क्योंकि वो उस क्लास का ऑब्जेक्ट है तो उसमें ऑटोमेटिकली नेम, सैलरी और एज ये 3 इसके लिए मेमोरी एरिया अलोकेट हो गया। मेमोरी will be allocated to that object for those 3 attributes, but the data or the value assigned to that attributes may be different. तो क्या हो सकती है वैल्यूज? maybe Amit 25,000 salary, age 25. I can create 1000 number of objects from one class. So I will create from another object. Now what is the another object is? Again it will get the 3 copies. Name, salary, age. Name Kumar, salary 20,000, age 27. But the data is different this time. So once you create a class and then you create number of objects from that class. This is what the concept is. The class is a blueprint of an object, and when we create an object from the class, that process is known as instantiation. क्योंकि object को क्या बोलते हैं? Object is instance of a class. Object is variable of type class. तो C++ में class क्या है? Or in C++, or you can say in object-oriented programming language, class is a new data type that contains the methods and member variables, means the attributes, okay, and member functions that operate on these variables. Okay, so here you can see syntax for defining the class. Class space class name. Then opening curly bracket, write down the member functions, member variables means attributes and functions here, and then close the class and semicolon. For now, just remember this syntax कि class ऐसे define होती है। क्लास कीवर्ड लिखा जाता है, इसके सामने आप कोई भी क्लास नेम दो और फिर उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोडिंग लिखी जाती है। एंड सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लास इज क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम। दिस इज द सिंटैक्स फॉर। देन सी दिस एग्जांपल। If I'm creating class fruit, then from class fruit, how can I create the object? See,
फ्रूट एप्पल, फ्रूट मैंगो। इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर क्लास फ्रूट के कुछ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स है लाइक कलर, यू कैन स्टार्ट मार्किंग योर अटेंडेंस, मे बी देयर इज अ शेड्यूल अटेंडेंस है, वहां पे आ गया होगा आपके इसमें स्ट्रीम पे। डोंट लीव द मीट until I ask you to do so. Okay. So if there is a class fruit, और fruit class बोलती है कि हर fruit का एक कलर है और उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पल्प होता है। तो अगर हम फ्रूट क्लास से दो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, एप्पल एंड मैंगो, इट मीन्स दैट बाय डिफॉल्ट दिस प्रॉपर्टीज विल बी देयर बट स्पेसिफिक टू दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है? So apple, different color, but it will provide the nutrients and it will be having pulp also, but of different quality. Mango again will be having specific color, will be having providing nutrients and vitamins, and will be having the pulp. Similarly, second example, class car. क्लास कार अगर हमने लिखी है तो उस कार क्लास में जो भी एट्रीब्यूट या फंक्शंस आपने डिफाइन किया है, तो बाय डिफॉल्ट दे विल बी एप्लीकेबल टू ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स व्हिच यू क्रिएट फ्रॉम द क्लास कार, लाइक Maruti, Ford, Tata, right? I have created this object, so by default there will be the wheel, there will be manufacturer ID, there will be the engine. तो बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो सब में आ ही जाएगा, बस हर एक का स्पेसिफिकेशन अलग अलग होगा, राइट? दैट इज वाई द ऑब्जेक्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड। नो, एक ही कॉपी क्रिएट करनी होती तो हम ऐसा प्रोग्राम ही नहीं लिखते, हमें अलग अलग ये बनाने हैं। तो हम एक ही क्लास बनाएंगे स्टूडेंट, जिसमें आप सेक्शन बी के EXTC के सेकेंड ईयर के 42 और whatever 38 students will be there, each with having different name, different address, different mobile number, different email ID. So you are all objects of the class student, right? But each one is having its specific attributes and each one is having can access those functions. Like everyone will have to appear for the exam, everyone will have to participate in the sports and everything. Likewise, similarly there is class account. तो अगर वहाँ पे account number है या फिर वहाँ functions है like loan, so they will be applied to the objects like RIA and Twitter also. So this is what the class is.